काम आपण केलं पाहिजे आणि सर्व घटकांना न्याय देईल असा प्रयत्न आपण निश्चितपणे सगळ्यांना करूया असं मला वाटतं. सेन्ससची मागणी राहुलजींनी केली आहे, कास्ट सेन्ससची. त्यांची पहिलीच मागणी आहे की कास्ट सेन्सस करा, म्हणजे आपल्याला कळून जाईल की कुणाच्या किती आहेत जाती आणि कशा पद्धतीने आपल्याला सेन्सस करायचं आहे. ते सुद्धा आपण मान्य केलं पाहिजे. सेन्सससाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद नाहीये आणि जर सेन्सस नाही झालं तर आपण जे 12-13 कोटी लोक या महाराष्ट्रातले हे या देशामधले हे जे दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर आहेत अजूनही, त्यांना आपण कशी मदत करणार आहोत? ज्यांना फूड सिक्युरिटी बिल मध्ये आपण घेऊ शकलो नाही त्यांना कसं आपण फूड सिक्युरिटी बिल मध्ये घेणार आहोत आणि त्यांना कसं आपण मदत करणार आहोत? म्हणून सामाजिक आर्थिक म्हणजेच सोशिओ इकॉनॉमिक जनगणना, सोशिओ इकॉनॉमिक सेन्सस ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. महाराष्ट्राची फार मोठी भूमिका या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, मॅडम आपण मुंबईचे आहात आपल्याला माहिती आहे, महाराष्ट्राची फार मोठी भूमिका आहे. महाराष्ट्र देशाची आर्थिक राजधानी ही मुंबई आहे आणि ह्या देशाच्या एकूण कॉर्पोरेट टॅक्स पैकी 40% इन्कम टॅक्स, 32% 40% कॉर्पोरेट टॅक्स, इन्कम टॅक्स 32% आणि 20% जीएसटी एक नंबर महाराष्ट्राकडून आमचं या देशाला येतं, दिल्लीला येतं. आणि दिल्ली आम्हाला काय देते? 1 रुपयातले 7 पैसे जे आता बजेट आलेलं आहे. ह्याचा कुठेतरी तुम्ही याला मोठ्या बातम्या करता, मोठ्या गोष्टी सांगता, या गोष्टीचा कुठेतरी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मला असं वाटतं की क्रिएटिव्ह रिडेव्हलपमेंट ऑफ अर्बन लँड स्पेसेस हा जो उल्लेख केला निर्मलाजींनी की आम्हाला क्रिएटिव्ह रिडेव्हलपमेंट ऑफ अर्बन लँड स्पेसेस, त्याच्यामध्ये धारावी आहे का? तर धारावी हा फार मोठा प्रश्न आहे मुंबईचा. जर धारावीमध्ये तुम्ही क्रिएटिव्ह रिडेव्हलपमेंट करत असाल आणि त्या धारावीमध्येच तुम्ही पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये जर एका मोठ्या उद्योगपतीला दिल्याची गोष्ट ही मला आमच्या कानावर आलेली आहे, अदानीला दिलेली आहे, मी स्पष्ट नाव घेऊन सांगते, तर मग ते दुर्दैवानं या देशाचं दुर्दैव आहे की दिल्ली मुंबईतली एवढी मोठी जागा जर आपण त्या एका मोठ्या उद्योगपतीला दिली तर हा देश कुठे जाईल? कुठे जाईल हा देश? हे विचारावं लागेल. आणि त्याच्यामध्ये परत कुर्ला, मुलुंड आणि खारसॉट पॅनलँड ह्याची सुद्धा त्यांनी मागणी केलेली आहे. मला असं वाटतं की हे सर्व स्पष्टीकरण ह्याच्यावर होणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातले बरेच उद्योग मॅडम गेल्या 10 वर्षामध्ये या महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलेले आहेत, दुसऱ्या राज्यात गेलेले आहेत. आणि हिरे उद्योग सुरतला गेलेला आहे, हिरे उद्योग सुरतला गेलेला आहे गुजरातमध्ये. नंतर टाटा एअरबस निर्मिती प्रकल्प, वेदांत प्रकल्प ही गुजरातला गेलेला आहे. फॅक्सॉनची फॅक्टरी, वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय, अनेक महत्वपूर्ण हे सर्व महाराष्ट्राच्या बाहेर नेऊन महाराष्ट्रावर जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात आलाय. यांनी 2014 मध्ये सांगितलं होतं कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा. आज आम्ही तुम्हाला विचारतो भूपेशजी, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? कुठे नेऊन ठेवलाय? या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये माझ्या महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल या सर्व राज्यांवर सापत्न भाव ठेवला गेला. महाराष्ट्रामधलं म सुद्धा या बजेटमध्ये उच्चारलं गेलं नाही. जे राज्य तुम्हाला मॅक्सिमम टॅक्स देतं, जे राज्य तुम्हाला भरपूर पैसा पाठवतो, त्या राज्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष केलंय, कारण का त्या राज्याकडे तुम्हाला मतं मिळालं नाहीत. म्हणून मला एकच म्हणायचंय की ज्याला आपण ज्याला कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम म्हणतो त्याला आपण राजकारणाच्या परे जाऊन, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे आणि सर्व लोकांना एकत्र घेऊन महाराष्ट्र असो, गुजरात, सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि या सर्वसमावेशक सगळ्यांना वागणूक देणे जरुरी आहे. हा, मात्र हे सगळं बोलत असताना दोन राज्य मॅडम, हम दो हमारे दो, दोन राज्यांना फार मेहरबानी यांची, आणि ते म्हणजे बिहार आणि आंध्र. 3N, निर्मला, नायडू आणि नितीश बाबू, 3N. त्यामुळे त्या दोन राज्यांना त्यांनी महत्व दिलेलं आहे. आणि या बहुतेक सरांचं या सरकारचे ब्रीदवाक्य आहे. जसं पूर्वीच्या काळी आपण गोष्ट ऐकायचो की राजाची आवडती राणी आणि नावडती राणी. आम्ही सर्व नावडते आहोत आणि आवडत्या राण्या दोनच आहेत, ते म्हणजे आंध्र आणि बिहार. या दोनच राज्यांना सगळं दिलं जातं. विद्यार्थ्यांच्या बद्दल जर मी नाही बोलले तर हा अन्याय होईल, आणि म्हणून विद्यार्थ्यांच्या बद्दल मला बोलावं लागेल 2 मिनिटं. कारण नीट आणि UGC नेट या बातम्या, पेपर लीक या सर्वसामान्य घरातल्या मुलांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या बातम्या आहेत. जेव्हा खोटं नाटक करून IASच्या रांगेत सुद्धा लोक जाऊन बसतात, IASच्या खुर्चीवर जाऊन बसतात, आणि त्याला कळतं नंतर की खोटं प्रकार करून ते आलेत, त्याला माझ्या सारख्या सर्वसामान्य जी घरातली मुलं आहेत, त्यांची मुलं आहेत, त्यांना कुठेतरी दुःख होतं. पण मला एक वाटतं की याच्यामध्ये UPSCच्या चेअरमननी जो राजीनामा दिला ते स्तुत्य आहे. आणि सीजर्स वाईफ मस्ट बी अबाव सस्पेन्शन.
असं म्हणतो की आपण त्याच्यावर शंका घेता कामा नये, कारण युपीएससी सारखी जर विश्वासार्हता नसेल तर या देशामध्ये उरणार कायम आपल्या हातामध्ये. येणारी सगळी नवीन पिढी बर्बाद होऊन जाईल त्याच्यामध्ये. हेल्थ केअरच्या बाबतीमध्ये मला फक्त 2 मुद्दे मांडायचे की संपूर्ण देशासाठी हा अत्यंत महत्वाचा इश्यू आहे आणि तो इश्यू करत असताना आयुष्यमान भारत नाही तर हे उद्ध्वस्त भारत आहे, अस्वस्थ भारत आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या अनुसार आरोग्यावर जीडीपीच्या किमान 5% खर्च व्हावा असं अपेक्षित आहे, परंतु प्रत्यक्षामध्ये आपल्या देशामध्ये 1.9% फक्त आरोग्यावर खर्च येतो. आता मग अशी आमच्या एका सहकार्याने सांगितलं की आपण कर्ज टॅक्स भरताना आपण मोठे टॅक्स भरतो, प्रत्यक्षात आपल्याकडे काहीच येत नाही. आज आरोग्याची अवस्था मागच्या वेळेस आम्ही राज्यसभेत बोललो तर अत्यंत वाईट अवस्था आपल्या देशामध्ये आहे आरोग्याची आणि त्याकरता आपल्याला काय काळजी घ्यावी लागेल. मलेशिया, श्रीलंका, थायलंड यासारखे देश तर आपल्या पुढे आहेत. या व्यतिरिक्त जे डायबिटीज आणि बीपी हे जे 2 रोग आहेत की ज्याच्यावर देशामध्ये जीवनशैली निगडित आहे. जवळजवळ प्रत्येक 7 लोकांमध्ये एकाला डायबिटीज किंवा बीपी असतो. तर याचे जे औषध आहेत त्याच्यावर सुद्धा उत्पादन शुल्क कमी करणे हे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना नक्कीच दिलासा मिळेल. विकसित भारताचा नारा देणाऱ्या या सत्ताधारी पक्षाने किती प्रताडित केले. आम्हाला नेहमी विकसित भारत मोठे मोठे नारे द्यायचे, विकसित भारत, अमुक इंडिया, स्टँडअप इंडिया आणि 400 पार, सगळे नारे हे फक्त जुमले आहेत त्यांचे, बाकी काही नाही. ऑल जुमला. विकसित भारतचा नारा देणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने आम्हाला किती जरी प्रताडित केलं तरी आम्ही 145 खासदारांना आम्हाला सस्पेंड केलं आणि त्याच्यामध्ये बिलं पास करून घेतली. आपलंही सस्पेन्शन झालं होतं. पण आम्ही जर ठरवलेलं आहे की अशा प्रकारे जर यांनी केलं तर आम्ही सुद्धा हलणार नाही. शाखों से टूट जाए. एकदा मागे मला वाटतं कपिल सिब्बल यांनी हे सांगितलं होतं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि हम औकात में रहे आप. धन्यवाद. आपण बोलून दिल्याबद्दल आभार. Thank you. I just want to make, yes, I'm calling him, sir. Just one observation. When the chair, I may be your junior, the person sitting on the chair may be your junior, you all may be more experienced. But when someone's sitting on the chair, that person should not be disrespected because that's the disrespect of the chair. It is an observation. I would like to call Shri C.V. Shanmugam, who will be making his maiden speech. Thank you, madam. I pray my eternal leader Amma and thankful to our General Secretary Edappadi Palanichami, and thank you for the opportunity to speak on the budget 24-25 presented by Honorable Finance Minister. There are several issues that have not been adequately addressed in the budget, and I request the Honorable Finance Minister to consider them for allocation of funds to Tamil Nadu. Tamil Nadu has been receiving secondary treatment from the central government in terms of budgetary allocation and program implementation. No new projects have been initiated in Tamil Nadu. Only existing projects have been revamped for upgrade and modernization, which have often been superficial. Between 2009-10 to 2023-24, rupees 36.6 lakh crores was collected by Union government as cess and surcharges. An additional 5.5 lakh crores is projected for 24-25. This amount was not shared with states and was used solely by the Union government. The Finance Minister mentioned simplifying and rationalizing the tax structure to multiply the benefits of GST. Tamil Nadu, a fast developing industrial state, faces severe hardship due to GST, which needs to be addressed. As per our former Chief Minister and General Secretary AIDMK, Thiru Edappadi Palanichami stated, even though the Hosur-Coimbatore Defence Corridor is announced, no allocation of funds is made for this project. This lack of funding delays development and operationalization, hindering potential economic benefits and job creation. Tamil Nadu requires substantial investment to develop this infrastructure due to the rapid urbanization and industrial growth.
The budget allocation for infrastructure project is insufficient, hindering economic growth and job creation. Without adequate infrastructure, industries cannot thrive and citizens cannot access opportunities. While phase 1 of Chennai Metro Rail project is completed, regarding the phase 2 requires substantial funding to continue expansion and meet projected deadlines. The lack of financial support is slowing progress. Salem to Chennai 8-lane express highway, the enhanced connectivity facilities foster movement of goods and people and promote economic growth. The project requires necessary funding and support to overcome current challenges. The ministry claims to have completed 76 projects in Tamil Nadu, but most of these are pre-existing projects given a facelift. The real benefactors are the contractors, not the public. Regarding the flood mitigation, no mention or allocation for flood mitigation measures despite Tamil Nadu frequently facing cyclones. Employment linked incentive schemes. 3 schemes as part of the Prime Minister's package to boost employment and growth of MSME sector. Interlinking of Godavari, Kaveri rivers. No mention in the budget despite its importance for the farmers. Centers should devise schemes to prevent youth from drawn towards drugs and liquor, considering the recent tragic incident in Tamil Nadu where the consumption of spurious liquor, 70 deaths were occurred. The allocation of funds in the budget for 2025 does not sufficiently address the pressing needs of Tamil Nadu infrastructure, social justice, healthcare, and education. Tamil Nadu need projects, funds, not the alwa made by before the pre-budget. Thanking you. Thank you, Mr. Shanmugam. Shri Samirul Islam. You have 10 minutes. Madam, in one sentence, this budget is anti-people, anti-poor, and anti-Bengali. This is the budget that deprived Bengal 1,71,000 crore is pending from the union government. But it did not say a single word about it. In this budget, we saw how it became a budget for Bihar and Andhra Pradesh. It is not the union budget. It was a budget to satisfy the ally constituent to save the government only. We don't have any problem if the union government gives something to other state, but why have they deprived Bengal? It was painful to see how this budget has ignored the underprivileged in our country, especially those in the unorganized sectors who were neglected in this budget. This budget failed to address the needs of the unorganized sector workers, who number 43.39 crore according to the economy survey 2021-22. Sir, 83% of India's workforce is employed in unorganized sectors. And there is where my concern lies. The government often touts the registrations of workers on the SRAM portal and a few Pradhan Mantri Yojana to deflect criticism from opposition member of this August House. However, the government is actions repeatedly demonstrate a lack of concern for unorganized sector workers. Just before the budget was presented, the Supreme Court criticized the delay in verifying migrant worker registrations on the SRAM portal for the issuance of ration cards. I would like to know when this tax would reach a
substantial stage. It is disheartening that the court had to remind us about the plight of migrant workers, who are a vital part of the unorganized sectors. Government's own NSO report has revealed that unincorporated enterprises in the manufacturing sector lost some 5.4 million jobs from the middle of 2015-16 to 2022-23, and that 1.8 million establishments were lost. In contrast, West Bengal is the only state to have established a migrant worker welfare board under the leadership of our Honorable CM Mamata Banerjee, dedicated to the development of those who toil from one state to another. My demand is simple and clear. Why? My demand is clear and simple. Why could not the Union government announce a similar national migrant worker welfare board for the migrant worker in this budget? Sir, hundreds of migrant workers die in workplace accidents or during their travels. Yet, this budget failed to announce a comprehensive insurance scheme to support their families. In a time when inflation is a major issue and a constraint for the survival of the poor, the government should have announced project to aid migrant workers in child education and healthcare. According to the census data 2011, Uttar Pradesh and Bihar have the highest number of migrant workers with a combined total of approximately 2039 million. However, the Union government currently lacks accurate data on the number of migrant workers. The University of Labor and Employment initiated a nationwide review of migrant workers on April 4, 2021. The grim reality of migrant workers became painful, evident during the unprecedented COVID-19 pandemic outbreak. The finance minister proclaimed about linking the ISROM portal to other portals for workers and laborers to avail services. I wonder if the finance ministers or her colleague in the cabinet have ever spoken to our migrant workers. We are proud of this, the new building. इस बिल्डिंग में भी बहुत सारा माइग्रेंट वर्कर का भी हिस्सा है, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माइग्रेंट वर्कर के लिए कुछ कीजिए आप लोग. And try to understand if registering on ISROM has even given them a benefit on a single rupee so far. The finance minister announced rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers in PPP mode with VGF support. Yet the RAC scheme launched by the Union government in the aftermath of COVID for migrant workers in cities has failed miserably and has not found any takers from the private sectors. Only lip service and only eye washing. Apart from the migrant worker, crores of people are involved in unorganized sector in agriculture and MSME industries. After the budget, Prime Minister Narendra Modi said that this budget would help in prospering the MSME sectors. Unfortunately, this government did not favor those small, medium, and micro entrepreneurs. This government has systematically ruined the MSME sector during the past 10 years of Narendra Modi regime. I am proud to come from Bengal, which is the last 10 years has always been in the top 10 in MSME sectors. This government imposed a burden on GST on the MSME sector, and disbursement methods have been slower to discourage medium, small, and micro level investors. In this budget, we did not see any announcement to
promote the MSME sector. When unemployment became the prime constraint of development in PM Modi's regime, the systematic destruction of the MSME sector ensured another step to worsen the problem of unemployment. Sir, it is simple to reiterate that not only migrant workers, but this budget also failed to outline benefit for tribal people, Dalit, SCs, and minority communities. Recently, a BJP MLA in Bengal, LOP, suggested abandoning the PM's slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, and replacing it with Jo Hamara Saath, Hum Unka Saath. This is the real face of BJP. This is the real face of BJP. Let him speak. Let him speak, please. Sir, it reveals that He has a right. hidden agenda of the governments. It aims to undermine India's fabric, depriving minorities, SCs, STs, Dalits, and all the marginalized societies in our country. This budget did not announce anything related to welfare of the minority. I asked the government to introduce a fresh and new scheme for minority communities. The finance minister does not utter a single word on minority welfare in her speech. Nor has she announced any special measure for education, skilling, employment, or livelihood for minority communities. Let him speak. In fact, Let him speak. the budget allocation for the pre-matric scholarship has been reduced from 400 crore to 326 crores. About the last few years, the union government's only focus is to change the name of the central schemes for the Ministry of Tribal Affairs. After Prime PM Adi Adarsh Gram Yojana, this time the finance ministers has announced the launch of PM Janajati Unnat Gram Yojana. I want to ask this union government, what is the outcome of the previous schemes means for tribal welfare? Surely your colleagues in Madhya Pradesh have shown the way, divert crores of government funds for tribal welfare to construction of cow sheds and goshalas. I am a 37 years young Indian man living in Bengal. I am full of commitment that our great nation will keep the divisive, destructive force out, just like what we did on June 4, 2024. Thank you. Okay, then. Thank you, member. The next honorable member who has to speak is Mr. Mohamed Abdulla. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Sir, I rise to oppose the Union Budget 2024-2025. Sir, I hope you heard about a word, karma. Means what you sow is what you reap. Whatever you think, you will get. Whatever you do, you will have. They are always thinking about the minority in a negative way. They end up with the minority government. That is karma. That is karma. Yes. What you sow is what you reap. Before I begin to point out three key failures of this budget, I would like to thank the Indian people for putting BJP in its rightful place in this august temple of democracy. Yes. Honorable Finance Minister has become the first Finance Minister to present the budget for the 7th time in a row. I congratulate her for her capacity to deliver the budget speech. But people of the country, especially the middle class, feel that she has failed miserably for the 7th time without getting a pass mark. We expected good economic reforms and people-oriented schemes from her, but she has betrayed our hopes. Sir, this government is newly married with Bihar and Andhra Pradesh. We know very well that all the grooms lavishly spend for their newly married wife only in the beginning, not all the time. Only 60 days. Only in the beginning.
Only 60 days. But on the day of the marriage itself, everyone in this country knows that they will get divorced very soon. Sir, in America, people will get married to get a green card. Everyone knows this is not a real marriage, and they married only to get the green card. So this is the marriage of convenience. It is called as a marriage of convenience. Like this is called as a budget of convenience. We are waiting to see if the two states will run away after getting the special package, or these people will run away after taking their MPs. We are waiting. When the honorable PM says, because we should not interrupt it as growth, harmony and peace for ourselves and India. It must be translated as unimaginable growth for this beloved Gujarati 2-year business funds. PM said Sabka Saath, Sabka Vikas, but Saath and Vikas is mean only for two people and not the whole India. Sir, Honorable Sir, in the interim budget 2024-25, the finance minister claimed to have lifted out of 25 crore people from multi-dimensional poverty, from the poverty line. Among 25 crore people, I know only two people, the 2A businessman. Who are all the other 24 crore, 29 lakh, 29,998 people? Sir, why is union government favoring some states and harming revenue-generating states like Tamil Nadu? Ignoring opposition demand with such bias betrays our democracy and the cooperative federalism in our constitution. Why this bias? Why this hypocrisy? It is very sad that the union government, which is supposed to represent the people of the country as whole, is a puppet of very few. Sir, the budget 24 has provoked a constructive debate and unbearable disappointment in Tamil Nadu, a state known for its robust economic contributions and industrial powers. Tamil Nadu, often regarded as a manufacturing hub of India and a key player in sectors like automobiles, information technology, and textile, expected substantial support and recognition in this year's budgetary allocations and received nothing but disappointment. Even though issues like food relief fund and pending GST compensation have emphasized the demand of Tamil Nadu, the union budget has not addressed any of these presenting demands. Sir, it is very unfortunate and unfair that to see the union government's unequal distribution of income to the state governments, especially for non-BJP ruled states like Tamil Nadu, which provides the highest tax for the union government. For instance, out of the disaster relief of rupees 37,000 crore 906 crores was demanded by the government of Tamil Nadu for severely affected by the floods in 2023. Partly 276 crore only was given by this union government. The government has provided approximately 4.5 lakh crore to the Tamil Nadu from 2014 to 2023, while the direct tax collection from the state during this period was approximately 6.5 lakh crore. Sector pivotal to Tamil Nadu's economy such as agriculture, education, and healthcare have not received the support needed to foster sustainable growth and development. The finance minister, who spoke about the nation's food security while allocating funds for the Polavaram project in Andhra Pradesh, has conveniently forgotten the farmers of Delta region of Tamil Nadu, who are equally important to the food security of the country. Our finance minister, she has gone up and she graduated in Delta region only. The education ministry, UGC, and NTA have lost the trust of the people due to the continuous scams. The Director General of NTA has resigned and ran away. The UPSC chairman has resigned and ran away from his responsibility. But the Union Minister of Education is giving sermons as if nothing happened in NEET question paper leak. As an MP from Tamil Nadu, our long-held stand is NEET is not needed and all common entrance exam conducted by this union government must be stopped. For a true federal arrangement, the exams must be run by all the state governments, duly voted by their own people,
and move higher education back to the state list. By tinkering with education, we are not only failing our future generation, but also shaking the fundamental of this unified country. The union government has also stopped the payment of around 2,000 crore rupees to the government of Tamil Nadu under Sarva Shiksha Abhiyan, only because we do not agree with the new education policy which imposes Hindi, and it is against our state autonomy. When this government came to power for the first time, our Honorable Prime Minister proclaimed that they will create 20 million jobs annually. 20 million jobs annually. The Economic Survey 2024, this Economic Survey 2024 says 8 million jobs needed to be created till 2036. This government has the habit of hiding uncomfortable data from the public eye. This government does not respect any international data, while none of the data delivered by this government is respected in global circle. This means we only have a self-delusion leader, and the entire cabinet, supporters, social media, TV channels, singing his peons without focusing on the people. I am reminded Emperor Nero, who was busy with his fiddling while Rome was burning. The unprecedented unemployment problem in this country is getting worse day by day, and the government failure to tackle the unemployment problem in the country is unpardonable. Unemployment rate and its highest in independent, and if you see the unprecedented crowd of youth from North India in the southbound train is an humble proof for this unemployment problem in this country. But I am satisfied with the fact that this minority government did not announce that they would provide jobs to 40 crore youth from across the whole world. The Indian Railway, typically a central focus in the Indian budget and a major recipient of funds, surprisingly did not receive attention in the 2024 budget, even after consecutive train accidents. Sir, while the Union Budget 2024 sets a roadmap for India's economic path, its reception in Tamil Nadu underscores the necessity for inclusive and region-sensitive policy making. Addressing the concern of states like Tamil Nadu is not just about financial allocation, but about fostering a sense of equitable growth and partnership in India's journey towards prosperity. Sir, I want to tell one thing in Tamil, I will translate also. வங்கிகள் வட்டிக்கு வட்டி போட்டு மக்களை வதைக்கிறாங்க, ஒன்றிய அரசோ வரிக்கு வரி போட்டு மக்களை வாட்டுறாங்க. நம்ம நாட்டுல சகல வசதிகளோட சுகமா வாழணும்னா ஒண்ணு பணக்காரனா இருக்கணும், இல்லாட்டி பரமாத்மாவோட குழந்தையா இருக்கணும். Means bankers are harassing people by levying interest on interest, whereas the union government is exacting taxes on taxes from the people. Only two kind of people can live comfortably in this country. One is super rich, and second one is our honorable children of Paramatma. Sir, whether any concrete step being taken by this government to review the union government and state government relationship to uphold cooperative federalism in this budget, the answer is no. There are four things that our Dravidian model government in Tamil Nadu has given to Indian politics, which is mandate now for the development of this country, sir. One is equality, and another one is social justice. The third one is state autonomy, and the fourth one is welfare economics. All these were shaped by our unique historical continuity of Tamil Nadu on the basis of social justice, guided by Thandai Periyar, Peraringer Anna, Muthamilaringer Dr. Kalaignar, and now by our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thalapathy M.K. Stalin. This minority government should understand this first. Sir, yes, sir, Dravidian model, exactly the Dravidian model. Sir, before I conclude my speech, I would like to strongly register my protest for what the BJP leaders said during the campaign trail about minorities. Sir, my name is Mohamed Abdulla. I am a Tamil mother tongue, Tamil speaking, Tamil Muslim. For generations, we follow Islam. Once my floor leader, Honorable Shiva Anna, told in this August House, not one time, many times, even outside on stages also.
during the partition, we had a choice, but my forefathers stayed back. My forefathers, we had a choice. Shiva Anna told on this house, Muslims had a choice, but their forefathers stayed back here. No one can question my patriotism. No one. Like my family, millions of Muslim families stayed back here. We have the same equal rights like any other in this country. Belittling us as a foreigner or trying to evict us using CAA, NRC and countless other rules is not going to work. I am along with all the Muslims in this country, our sons and daughters of this soil. No government in power, either state or union government, can uproot us from our motherland. So stop playing your religious polarization card, and we collectively, Thank you, Mr. Abdulla. Thank you. let us try to uplift this great nation for the generation to come. With this, I conclude my speech, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Sanjay Singh. Your time is 12 minutes, Mr. Sanjay Singh. धन्यवाद मान्यवर, आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा मान्यवर। हमारे कुछ दोस्त जो कभी इधर हुआ करते थे, अब वो उधर चले गए हैं, उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा कि कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो जो लोग उधर चले गए मान्यवर, उनका दिल हमारे साथ है, भले वो किसी के साथ हो। मान्यवर, इस बजट का बहुत ढोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा अच्छा बजट, बड़ा विकसित भारत का बजट है। ये बजट क्या है मान्यवर? पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भारत माता की सेना रक्षा के लिए जो बजट आता है, उस बजट में कटौती करने का काम किया गया। 9.6% से घटाकर 9.43% किया गया। भारत का अन्नदाता किसान जो अपने खून पसीने से देश को चलाने का काम करता है मान्यवर, उसका बजट, कृषि का बजट 3.2% से 20% से घटाकर 3.15% किया गया। स्वास्थ्य का बजट, हिंदुस्तान 144 करोड़ लोगों का देश है मान्यवर, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य का बजट 1.97% से घटाकर 1.85% किया गया। ट्रांसपोर्ट का बजट 11.48% से घटाकर 11.28% किया गया। पेंशन, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 5.04% करने का काम किया। एनर्जी का बजट 2.10% से घटाकर 1.42% करने का काम किया। वैज्ञानिक विभाग का बजट 0.7% से घटाकर 0.6% करने का काम किया। फूड सब्सिडी का बजट 4.38% से घटाकर 4.25% करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट, मणिपुर की तो चर्चा आपने नहीं की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट आपने 0.13% से घटाकर 0.12% करने का काम किया। सामाजिक कल्याण, जिसमें आपका बिल्कुल यकीन नहीं है, उसका भी बजट आपने घटाया। 1.22% से घटाकर 1.17% करने का काम किया। आपने फर्टिलाइजर का, खाद का बजट 3.88 से घटाकर 3.4% करने का काम किया और फूड सब्सिडी आपने घटाने का काम किया। ये है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। हर वर्ग को आपने चोट पहुंचाने का काम किया मान्यवर। आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है,
5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे ये तो सच्चाई बताइए कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है? आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। ये इस देश की सच्चाई है। आपने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया। आपने 14 देश के प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उससे दोगुना कर्जा अकेले आपकी सरकार ने लिया। आपने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने का काम किया, देश को कर्ज में डुबाने का काम किया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं इस सरकार से किन किन वर्गों को उम्मीद थी। इस सरकार से उम्मीद थी देश के अन्नदाता किसानों को कि आप एमएसपी दोगुना करेंगे। आपने एमएसपी दोगुना नहीं की, आपने किसानों की फूड सब्सिडी का काटने का काम किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी काटने का काम किया, कृषि क्षेत्र को देने वाले बजट को खत्म करने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे। मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं। एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी आपका आंकड़ा सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। मान्यवर, इस देश में आपने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को, जिसका 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया, जो हजारों करोड़ लूटकर हिंदुस्तान से चले गए। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मित्रों बड़ी डिलीटेड जी, डिफिकल्टी। ठीक है सर। मान्यवर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में रेड़ी पटरी वालों का कोई योगदान नहीं? जो 10 करोड़ रेड़ी पटरी वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मान्यवर? वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं। आपकी सरकार उनको भी फूटी आंख से देखना नहीं चाहती। आपने रेड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदुओं की, मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार के कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है। लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर एक सेकंड honorable member and you are a senior person,
संजय जी, यू आर सीनियर पर्सन। धारा प्रवाह में आप काफी कुछ कह गए फिगर्स के बारे में, बाकी तो यू कैन मेक योर पॉइंट, नो डिफिकल्टी अबाउट इट। वन सेकेंड, तो द फिगर्स विच यू हैव गिवन, you will have tough time in proving them because these have been taken in stride. So all that will be deleted, and we will, unless you have real factually firmed up material, use a name. Other make your point. ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, Make your point. No थैंक यू issue. सर। मानवर, मैं तो ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था में, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, एक सेकंड, जाटव ढाबा कोई लगाएगा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहाँ खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। ये आपकी सच्चाई है। इसलिए नेम प्लेट मत लगवाइए। नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। और मान्यवर, मैं आपसे आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ। 1 second. मानवर, मैं जेल के बजट पे 1 second. 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। 1 second. सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है। मान्यवर, इसका ध्यान इस रखा देश जाएगा में अध्यक्ष महोदय। इन्होंने न्यायपालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब 76% अंडर ट्रायल है। इसका मतलब आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आपका मकसद है पकड़ के एक व्यक्ति को जेल में डालना। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं मानवर, अब इनको बार मौका मत दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट। आपने 2 बार हैबिट बना लिया इन्होंने सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। आप एक विपक्ष के नेता को पकड़ के जेल में डालते हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा। सबको पकड़ के आप जेल में रखते हैं। बंगाल के 3 मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। मैं तो 1-2 मिनट और मैं बस कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मेरे टाइम में से उसको काट लीजिएगा। मान्यवर, भेदभाव की बात, सबसे भेदभाव इनको करना है। मुसलमानों से भेदभाव, सिखों से भेदभाव, ईसाइयों से भेदभाव, दलितों से भेदभाव, पिछड़ों से भेदभाव, और अब राज्यों से भेदभाव, राज्यों से भी भेदभाव, महिलाओं से भेदभाव, राज्यों से भेदभाव। क्या भेदभाव किया सर इन्होंने? 2,32,000 करोड़ रुपए
2,32,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंद्रीय खजाने में टैक्स के रूप में दिया, जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में। बदले में हमको कितना मिलता है? 0। 9 साल से आप दिल्ली को बजट नहीं देते। पंजाब के लोग, बस मेरे में से काट लीजिएगा सर, 1-2 मिनट काट लीजिए, पार्टी के उसमें से काट लीजिए। पंजाब के लिए सर, पंजाब का किसान अपना खून पसीना बहा के खेत में गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है। आपने 8,000 करोड़ रुपए पंजाब के विकास का पैसा रोक रखा है, विपक्ष के राज्यों का पैसा आपने रोक रखा है। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? आप लिखते हैं राज्यों के विकास से देश का विकास है, ये आप राज्यों का विकास कर रहे हैं। एक एक करके टारगेट करके विपक्षी राज्यों के साथ आपने भेदभाव करने का काम किया। और अंत में कोई मुझे कह रहा था सारे बजट कम किए, शिक्षा के बजट को भी आपने कम कर दिया। मैंने इन लोगों से कहा शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं। मान्यवर, क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग। मनुस्मृति पढ़ाएंगे कि दलितों के, पिछड़ों के, जिनको आप शूद्र कहते हैं, अगर वो श्लोक सुन लेंगे तो उनके कान में पारा आप कैसे डालेंगे? ये पढ़ाई आप कराने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये पढ़ाई आप कराने जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के व्यापारियों के खिलाफ है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया है। The later part will not go on record. Honorable members, yes. Honorable members, I am privileged and honored to be Chancellor of Delhi University. The honorable member has made some reflections. They are far distanced from reality. As Chancellor of Delhi University, one second. As Chancellor of Delhi University, I am updating myself every fortnight. And this university is rising in excellence. Therefore, the observations of the honorable member, perhaps you need to check up. If you check up, we'll check. Secondly, no. Sanjay, you are not an issue now. Jairam is trying to ridicule, make it a farcical situation for chairman's well-meaning observation that in this house we must use information which a member must be prepared to authenticate. Now it is his mindset, in spite of his long career and ministerial background, that a member should be so engaging. I can only say I have no words to reflect on this. I can only appeal to senior members of the House that there is need for him to think within. Honorable members, I need to put on record one thing which is relevant. In this country, governed by rule of law, the arrest may be by an agency, by the police, but sending someone to jail is not a police job. One second. It is not the job of an agency also. A court lawfully acting sends a person to jail. So anyone, one second, listen to me, anyone in this country holding whatever position of a minister or a chief minister otherwise, if he is in jail, it is in compliance of a remand order given by a judicial magistrate. And therefore, the
the assertion by the honorable member that executive is sending people to jail is not only factually wrong, legally also not sustainable. And बोला सर मुझे सर सर संजय जी भारत की सर सर आपको बोलने दूंगा, एक सेकंड। आप तो अनुभवी हैं, आप जब गए जेल तो शुरू के अंदर तो एजेंसी का रोल था, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रिमांड से बने, कानून में तो स्पष्ट है। we have one of the best legal minds in the country. He knows that you cannot go to jail without it being sanctified by a judicial officer. आप उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी अपनी बात इनसे पूछूंगा नहीं, इनसे ज्ञान लेता हूं मैं। ठीक है सर। On this count, outside Mr. Kapil Sibal may have several hats of a journalist, of a senior advocate, of a political vakta. He can do it. Here in the house, he will have to confine to the absolute legality. We can give quite a tweet. बिल्कुल, बस सर मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बातें 100% अपनी जगह जायज है, लेकिन अरे भाई सुन तो लो, सुनो। लेकिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ सर कि ईडी कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई। जमानत की कॉपी के बगैर इनकी एजेंसी जाके हाई कोर्ट से उनकी रिहाई पर रोक लगवाती है। ईडी ईडी किसके अधीन काम करती है सर? ईडी नरेंद्र मोदी के अधीन काम करती है। ईडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन काम करती है सर। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, एक समझ गया मैं, एक सेकंड, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एट लार्ज एंड द कंट्री एज वेल, anyone has a right to go to a court of law, but ultimately final decision is of the court. There are occasions when court grants bail, there are occasions it does not grant bail. So don't accuse. The two parties are there, either party can go to the court for relief, but ultimately it is judicial verdict. Shri Kapil Sibal. Thank you, Mr. Chairman, I am sure, sir, you will for giving me this. rise to the occasion of your stature. Thank you, sir. Thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion on the 2024